Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday I posted a video that LIC IPO will be there in the month of May. And in that video I discussed that we can expect recruitments thereafter. So one of our subscribers raised a query, sir, what is correlation between IPO and recruitment? It's a very good question. There is no correlation between recruitment and IPO. Recruitment is an ongoing process. Recruitment depends upon various factors. Recruitment is filling the vacancies. As and when an organization requires the staff, they can go ahead with the recruitment and recruit. Now, what is the history of recruitment in LIC? LIC does not recruit staff every year. Sometimes they do it after 2 years, sometimes they do it after 3 years, sometimes even gap is more. So if we look at the history of recruitment of LIC assistant, it is very shaky. The last 2019 recruitment process came after many years. And when this channel broke the news, nobody believed it. And there was no previous history with so many people. Those are associated with the education in recruitments. So naturally there was a disbelief that recruitment will happen in 2019 as far as LIC assistant is concerned. But why LIC come out with recruitment of assistant in 2019? The simple answer is they required the staff, they recruited. Okay? So there is no correlation between IPO and recruitment. This is very, very clear. But why I mentioned that after IPO, recruitment processes may start. This is based on an information where some of the employee told, sir, during IPO, the entire attention of the management is always on IPO. And there were some discussion going on in some officials that recruitment will start after IPO. And that's why I shared that information. And it is quite obvious also that when there is a major event, the focus of the organization is always on the upcoming major event. And sometimes the regular events takes the back seat. But if we look at the other factors of IPO, what are the positive impact of IPO on an organization? IPO means you are going to public to raise the capital, and this capital may be additional capital or this may be sale of shares by the existing shareholder. In case of LIC, the IPO is comprising of sale of shares by Government of India to various investors. That means the government will get the money and the investors will put the money in LIC. So what is the advantage to LIC or to Government of India or to investors? Government of India will get the money, they will get the valuation of a company, and the company will be listed. Advantage to the investor is they can participate in the ownership process of LIC. They can reap the benefit of profits earned by LIC, which is a prestigious organization. Advantage to LIC is the moment the company is listed, now they are no more dependent on one source for capital, that is Government of India. Now they are capable of raising capital through other sources also. So, they will have freedom of expansion.
Now they are solely dependent on Government of India to get the capital. If government is having scarcity of funds, they will not provide the funds, hence limiting the growth of organization. But the moment company is listed, now it has multiple resources. One is Government of India, another are the public or financial institutions or foreign institutions. So the flow of capital and the sources of capital rises, and this gives freedom to grow. So whenever IPO comes, it is normally observed that these companies goes for extraordinary growth soon after IPOs. And once an organization is going for growth, growth cannot happen without staff. And it has been seen in the case of State Bank of India when it came out with IPO in 1990s. Thereafter, the growth of State Bank of India was fantastic. Similarly, after the IPOs of various public sector banks, they grew at a very, very fast rate as compared to prior to IPO. Because once you are free to raise the capital, and once you get the capital, then there is additional pressure of public and institution to perform. That itself take you to higher growth momentum. And the moment you are at a higher growth momentum, naturally staff requirement rises. So there is an indirect relationship between IPO and staff requirement. But in case of LIC, it is already overdue, because last recruitment happened in 2019. People have retired, intervening. Then some people, those joined in 2019, they have resigned. So there is a requirement, and everybody is aware of this. Even the staff working in LIC is talking about this for very frequently. And even the process of identification of vacancies in LIC is already on. Someone is having a feeling that this identification process is not on, maybe due to lack of information. Already LIC is taking the data from its branches, from various offices, what is their staff requirement. It is on, and this is prerequisite of any recruitment process. And someone shared this screenshot also, and I placed that screenshot on our Telegram channel also yesterday, on the community of this channel yesterday. In that it is indicating that some higher officials need the data, what is the position of LIC assistant in LIC. So there is no direct relationship, but yes, once IPO is through, once LIC become a listed company, the expansion of LIC will be faster than past, because the listing itself allows free publicity of an organization, the people those are trading, the people those are discussing about an organization that rises, because investors always keep a close watch on the performance of organization where they put in money. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल एक खबर आई कि LIC IPO मई में आ रहा है, उस पर हमने एक वीडियो बनाई. उस वीडियो में हमने एक बात कही कि LIC IPO के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस स्टार्ट हो सकते हैं. अब इस पे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया, सर क्या कोरिलेशन क्या है इसका? बिल्कुल सही है, देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो डायरेक्ट लिंकेज, बट यस देयर इज इनडायरेक्ट लिंकेज. व्हाट इज IPO? IPO means you are coming out with a public offering where certain investors will be allowed to invest in the share capital of your company. So once LIC comes out with the IPO, that means LIC shares will be offered to public institution, FIIs, and in turn they will become the shareholder.
अब उससे होगा क्या कि जब ये ऑफरिंग होगी, जब ये शेयर्स लोगों के पास जाएंगे, तो अब LIC जो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट थी अपनी कैपिटल के लिए, अब उसका एक नया रास्ता खुल जाएगा कि वो मार्केट से भी पैसा उठा सकती है शेयर कैपिटल के लिए। अभी जो IPO आ रहा है उसके अंदर पब्लिक से नई कैपिटल नहीं उठाई जा रही। अभी IPO के अंदर क्या कर रहा है कि जो भारत सरकार के पास शेयर्स हैं वो उसमें से एक हिस्सा वो बेच रहे हैं और ये जनरल पब्लिक, FIIs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास चला जाएगा। अब इससे क्या फायदा है? गवर्नमेंट को क्या फायदा है? LIC को क्या फायदा है? इन्वेस्टर को क्या फायदा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा यह है कि उसकी एक कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी मार्केट के अंदर और उसको कुछ पैसा जो उसका इन्वेस्टेड है LIC में से वो रिलीज हो जाएगा और उसके दूसरे खर्चों के लिए मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा है, जबकि ऑनरशिप मेंटेन रहेगी, फिर भी कुछ हिस्सा बेच के वो पैसा उगा लेगी। LIC को एडवांटेज ये है कि अभी वो अनलिस्टेड कंपनी होने की वजह से जब भी उसको कैपिटल चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिल सकती थी। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं है या कम पैसा है या स्कैरसिटी है पैसे की, तो वो पैसा LIC को नहीं दे पाएगी और LIC को अपने ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। अब क्या फायदा है इन्वेस्टर को? इन्वेस्टर को फायदा यह है कि LIC एक ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसके पास बहुत अच्छा रिजर्व है। अगर वो उसका ओनर बन जाता है, ओनर मीन्स वन ऑफ द ओनर, नॉट द प्राइवेटाइजेशन, डोंट कंफ्यूज विद दिस। ओनर मीन्स वंस यू बाय द शेयर ऑफ ए कंपनी यू बिकम ऑनरशिप टू द ऑनर टू द एक्सटेंट ऑफ योर शेयर होल्डिंग। दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी उसके मुनाफे होंगे, उसमें से कुछ हिस्सा आपको शेयर होगा। तो वो शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर बनते ही उसको अब प्रॉफिट मिलने लगेंगे। जब उसको प्रॉफिट मिलने लग जाएंगे, जब वो हिस्सेदार बन जाएगा, तो वो नेचुरली मैनेजमेंट के ऊपर दबाव भी डालेगा कि आप अच्छा परफॉर्म करिए। तो जब शेयर होल्डर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, एक तो उसको प्रॉफिट्स मिल गए और दूसरा वो उस कंपनी के अंदर अपनी बात भी कहने के लिए एक व्यक्ति बन गया, एक इंस्टीट्यूशन बन गया। तो यूजुअली ये देखा गया है जब भी किसी कंपनी का IPO आता है, उसका जो ग्रोथ मोमेंटम है, उसका जो ग्रो करने का तरीका है, वो एकदम बदल जाता है, क्योंकि अब उसके पास एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल के अनेक रास्ते खुल चुके हैं। तो वो जो भी उसको एक्सपेंशन करनी होती है वो तेजी से करता है, और जब कैपिटल लिमिटेड होती है तो वो लिमिटेड रास्तों पे चलता है। तो जितनी भी IPOs आई हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का IPO 1990 के दशक में आया हो, चाहे बाकी बैंकों के IPOs आए हों, तो सब में ये देखा गया है कि सभी बैंकों ने उसके बाद बहुत तेज़ी से तरक्की की, और जब तरक्की की तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी। अब मान लीजिए LIC के पास IPO आ जाता है और उसके रास्ते खुल जाते हैं, तो बिजनेस मॉडल में भी परिवर्तन आएगा। नए नए क्षेत्रों में भी LIC इंटर कर सकती है, और जब वो एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, जब बिजनेस एक्सपेंशन होगा, जब उसके रास्ते खुल गए, नेचुरल स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। वो तो एक तरीका है कि हमेशा IPO, हमेशा कैपिटल किसी कंपनी को अगर मिलती है तो उसके आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है। पर दूसरी चीज़ क्या है LIC के केस के अंदर, कि उससे पहले क्यों नहीं रिक्रूटमेंट, उसके बाद ही क्यों? ऐसा कई बार होता है कि जब आपके पास कोई मेजर इवेंट होता है, मान लीजिए LIC को एक IPO लाना है, तो जो मैनेजमेंट है या जो उसके एम्प्लॉइज हैं, उनकी सारी एनर्जी उसके ऊपर लगी होती है। तो कई बार जो दूसरे इवेंट्स होते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए डेफर कर दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये चीज़ आ जाएगी तो अब जो रिक्रूटमेंट इन हैंड है वो उसके बाद हो जाएगी। ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने अपने सीनियर्स को ये बात करते हुए सुना कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस IPO के बाद आ जाएगा, उसने मुझसे शेयर किया, मैंने आपसे शेयर किया, इतनी सी बात है। पर क्या LIC के अंदर रिक्रूटमेंट होगी, इसकी क्या संभावना है? ये बड़ा क्लियर है। 2019 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई, 2019 के बाद 20 में नहीं हुई, 21 में नहीं हुई। तो स्टाफ रिक्वायरमेंट तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, लोग इस दौरान रिटायर भी हुए हैं, लोगों ने रिजाइन भी किया है, तो स्टाफ रिक्वायरमेंट तो वहाँ है ही, ये तो सबको ही पता है।
अब LIC की हिस्ट्री क्या है रिक्रूटमेंट की? LIC कभी भी हर साल रिक्रूटमेंट नहीं करता। जहां तक AO का सवाल है, कहीं पर 2 साल बाद, कहीं पर 3 साल बाद रिक्रूटमेंट आती रही है। असिस्टेंट की हिस्ट्री बहुत रेगुलर नहीं है। जब 2019 में इस चैनल पे मैंने बताया LIC असिस्टेंट आएगा, लोगों ने सुना ही नहीं था। और खासकर उन लोगों ने जो एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो उन्होंने असिस्टेंट वर्ड LIC सुना ही नहीं था। तो कोई लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे। मगर LIC असिस्टेंट तो सालों साल से काम कर रहे हैं, कई सालों से भर्ती नहीं हुई। अचानक LIC ने सोचा कि भर्ती करनी है और 2019 में कर डाली। अब उसमें से कई लोग ज्वाइन किए, कईयों ने ज्वाइन करके रिजाइन किया, कई लोग रिटायर हो गए। तो अब LIC के अंदर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट से पहले का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाफ, वो हो ही नहीं रहा LIC में। ये भी ऐसा ठीक नहीं है। LIC में पहले से ही कितना स्टाफ चाहिए, 31 मार्च को कितनी स्टाफ पोजीशन थी और कितनी शॉर्टेज है, ये प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस चल रहा है और एक व्यक्ति ने इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा, वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है और इस चैनल की कम्युनिटी पे भी डाला था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हेड ऑफिस को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की कि असिस्टेंट की क्या पोजीशन है 31 मार्च को। जो 2019 में लोग ज्वाइन किए थे उसमें से कितने छोड़ गए हैं। तो प्रोसेस चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। अगर कहीं पर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि यह प्रोसेस नहीं चल रहा है, शायद उनके पास खबर नहीं है, पर प्रोसेस चल रहा है जो LIC के लोग बताते हैं, क्योंकि जो स्टाफ है उनको तो पता ही होता है ना इस चीज़ का। अब प्रोसेस किस स्टेज पे है ये जरूरी नहीं हर एम्प्लॉय को पता हो। मगर ये आप मान के चलिए कि काफ़ी लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं आपस में कि LIC के IPO आने के बाद LIC में रिक्रूटमेंट्स होंगी। तो इसको मानने में कोई नुकसान नहीं है। मतलब ये मानना कि नहीं होगी, इसी में नुकसान है ना क्योंकि हम तैयारी नहीं करेंगे। पर अगर हम ये मान लें कि होगी और हम तैयारी कर ले तो हमें फ़ायदा ही होगा ना। भाई 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, ये तो चलो ठीक है। लोग अपनी अपनी बातें कह सकते हैं कि भाई इतनी जल्दी नहीं आएगा, उतनी जल्दी नहीं आएगा, हो सकता है, हर आदमी का अपना व्यू है। पर जो खबर आ रही है अगर हमें पता लगती है और हम बता देते हैं लोगों को, उसमें भी क्या हर्ज है? उसमें कोई हर्ज नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।